So students, today we are going to discuss about the next topics over unit, that is properties of bulk matter. So the first topic is capillary. First topic of our discussion is capillary. What is capillary? Capillary basically a thin glass स्ट्रैंड जिसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं इस तरह से ओपन. दीज आर जैसे हमारे हेयर के जो स्ट्रैंड्स हैं इतनी थिन क्या होती हैं ग्लास की फाइन स्ट्रिप्स होती हैं जिसके दोनों एंड्स क्या होते हैं इस तरह से ऊपर. वेन एवर वी इमर्ज अ कैपिलरी इनसाइड अ लिक्विड तो क्या होता है पानी जो होगा या वाटर या कोई भी लिक्विड होगा वो राइज करना इसमें शुरू कर देगा. So this phenomena of rise of liquid in the capillary when immersed in a liquid is called capillary action or capillarity. So this is called capillarity. Example क्या है, अगर आपने देखा होगा जो टावल होते हैं, टावल में इस तरह से थिन क्या होते हैं छोटे छोटे पोर्स. अगर आप उसको पानी के ऊपर रखोगे तो वो ऊपर की तरफ वो पानी क्या करेगा इस तरह से राइज और वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा. और एग्जाम्पल जिसकी क्या ले सकते हैं, स्पॉन्ज इसकी एग्जाम्पल है. ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग पेपर के जो थिन पोर्स हैं वो क्या होते हैं उससे इंक क्या हो जाएगी ऊपर आ जाएगी विदाउट वेटिंग द पेपर. सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ capillary action. So now we will discuss about Ascent formula. It's very important. Let's discuss about that. So I have drawn here a diagram in which in liquid we have immersed a capillary tube. So what will happen, this will be the meniscus, this upper surface will be the meniscus of the capillary tube. Suppose the radius of this meniscus is R and the liquid rises up to this level, its height is H. Now we know due to surface tension it will experience, the meniscus will experience an upward thrust. So surface tension की वजह से ये downward इसको क्या करेगा पुल करेगा और हर एक एक्शन का वहां पे क्या होता है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो R equals to S, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. Now resolving R into two components, R cos theta, R sin theta. Similarly, this happens here. So actually this thing is happening over each point of its circumference. So total upward force equals to 2 pi r, that is circumference, into r cos theta. Fine. So it will be the total upward force. Now since r equals to s, so I can write here 2 pi r s cos theta. Now let's find the volume of this capillary tube. So volume of tube equals to volume up to this height and the volume of this meniscus, this hemisphere. तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h प्लस वॉल्यूम ऑफ cylinder of height, so its height is r, height r and radius again r, minus volume of hemisphere of radius r. So what is happening here, so this is the complete complete cylinder of radius r and height r. अगर मैं इसमें से इस हेमिस्फीयर को माइनस कर दूं
तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो वॉल्यूम है एक्चुअल में, ये हमारे पास आ जाएगा. सो दिस प्लस दिस इज द होल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब. सो पुटिंग द वैल्यूज हियर, we know the formula of volume of cylinder is pi r square h plus volume of cylinder r pi r square into r height minus volume of hemisphere is 1 by 3 1 by 2 into 4 by 3 pi r cube. So this comes out to be pi r square h pi r cube minus 2 by 3 pi r cube. So this comes out to be pi r square h plus pi r cube over 3. Fine. So taking commons outside, we get h plus r by 3 in the bracket. So this is the volume. If I find the mass of liquid inside the capillary, then it can be written as mass of liquid equals to density into volume. So putting the value of volume here, I will get pi r square h plus r by 3 into density. So weight of liquid in the capillary is, as we know, it will act downward. So weight of liquid कितना होगा, mass into m into g होता है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. So it will come out to be m into g. So pi r square h plus r by 3 rho into g. So this is the it is the upward force and this is the total downward force. At a point of equilibrium, total upward force and total downward force would be equal. So equating equation 1 and 2 for equilibrium. So h plus r by 3 comes out to be 2s cos theta over rho into g, or h equals to 2s cos theta upon rho g minus r by 3. So this is the formula of, this formula is called ascent formula. So this is a ascent, derivation of ascent formula. Fine. So this is the ascent formula. Since radius of tube is really very small, so we can neglect r by 3. So r by 3 is very small. So we can write h equals to 2s cos theta upon rho g. So this is the ascent formula for capillarity. Now for we will discuss the special case here. For a tube of capillary tube of insufficient length, so for that case cos theta becomes cos theta becomes equals to 1 almost. तो उस केस में क्या होगा, 2s by r rho g. Since all of these quantities are constant, so I can write h into r becomes constant, or h is inversely proportional to r. So whenever value of h is small, the value of radius of meniscus will increase accordingly, so that the product remains constant. So this is the special case.
Now we will discuss some another part of the, this is hydrostatic. So here the hydrostatic part of our unit is completed. Now we will discuss the basic terms related to the hydrodynamics. As its name indicate, hydro means liquids or water and dynamics means motion. So now hydrodynamics. So whenever a liquid flows, the internal velocity, internal friction between the various layers of the liquid is called viscosity. हमें पता है जब भी, we know whenever there is a motion, there is a resistive force called friction is there. So in case of fluids or liquids, the friction between internal layers of the liquid is called viscosity. It is also known as fluid friction. So it is a kind of friction. So it opposes the motion of the relative motion between the layers of the लिक्विड. आपने देखा होगा कभी भी अगर स्पिल हो जाए लिक्विड कहीं से, तो एक आफ्टर ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस ही अपने आप क्या हो जाता है, उसका मोशन खत्म हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है. वो क्यों होता है? बिकॉज देयर फ्लूइड फ्रिक्शन प्लेज इट्स रोल. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कोफिशिएंट ऑफ viscosity. So coefficient of viscosity equals to shearing stress, ratio of shearing stress and strain rate is called coefficient of shearing stress. shearing stress का फॉर्मूला क्या होता है? shearing stress is equals to force upon area, and for strain rate equals to shearing strain over time. So what is shearing strain? Suppose कितनी shear हुआ है? डेल्टा x अपॉन लेंथ l ओवर टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा t. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी. सो वी कैन राइट हियर एज write it as v upon l. So v is velocity and l is the length of the particular that point up to which the liquid travels. So यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम इससे मीटा से डिनोट करते हैं. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट f upon a equals to v upon l. So fl equals to v into a. Fine. So if I talk about the units of the coefficient of viscosity, it comes out to be Newton. For length meter, for velocity meter per second, and for area meter square. So this will cancel each other. So it comes out to be Newton meter 2 inverse second. So this is the unit of coefficient of viscosity. Also it is written as Poiseuille. So after the name of, so its unit is also called Poiseuille. जैसे न्यूटन फोर्स की यूनिट है, उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट होती है Poiseuille. So it is written as Poiseuille. As we know, this is the formula for pressure. Unit of pressure is Pascal. Second, also its unit, or we may write it as a PL, Poiseuille. So how can we define it? So if I take length of tube equals to 1, velocity gradient 1 and area 1, तो जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. So the coefficient of viscosity is the force required to maintain unit velocity gradient through 1 meter length and 1 meter square area. So ये क्या हो गया हमारी definition. Now what will be its dimensional formula?
Dimensional formula will be m1 l1, यहीं से ड्राइव कर रही हूं मैं, m1 l1 t minus 2 l minus 2 t1. So this comes out to be m1 l minus 1 t minus 1. So this is the dimensional formula for coefficient of viscosity. Now let's discuss about Poiseuille's equation. So Poiseuille discussed actually the flow of liquid across a horizontal capillary. So I'm writing here as Poiseuille's equation or formula. So he discussed the flow of liquid through a horizontal capillarity, and here the liquid is, layers of liquid are flowing with the velocity. So he concluded that volume of liquid entering the capillarity is directly proportional to pressure difference between the ends of two ends of capillary. Directly proportional to, it is directly proportional to fourth power of radius of this capillary and inversely proportional to length of the capillary and inversely proportional to coefficient of viscosity of the liquid. So अगर मैं इन फोर इक्वेशंस को कंबाइन करूं, so it will become PR4 meta L. So replacing sign of proportionality with equal to sign, I will insert a constant that is pi by 8. So this equation is called Poiseuille's equation. So this is Poiseuille's equation. So आपको ये इक्वेशन करनी है. सेकेंड थिंग, आपको इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस, वो ऑलरेडी आप कर चुके हो फर्स्ट यूनिट में, तो डायमेंशनल करेक्टनेस भी चेक करनी आ सकती है. तो इसको डायमेंशनली, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, वेयर v इज वॉल्यूम, t is pressure difference, r is radius, meta is the coefficient of viscosity, this is the length of tube. So you have to check its correctness dimensionally. Now we will discuss about the Stokes law. Very important, Stokes law. So according to Stokes law, whenever a spherical body of radius r move through a viscous medium, तो इस वो क्या करता है, जो लेयर जो उसके कांटेक्ट में है उसको अपने साथ साथ मूव कराना शुरू कर देता है. तो जो दूर होती हैं लेयर्स, द लेयर्स दैट आर फार अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी विल बी एट रेस्ट, एंड द लेयर्स दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी विल बी इन अ continuous motion. So this will arise the relative motion between various layers of the liquid. So there will come a backward dragging force which will try to oppose the motion of the body. So this dragging force is F. So it was found that it is directly proportional to coefficient of viscosity of liquid, suppose raised to power a. It is directly proportional to radius of body, suppose power b. Directly proportional to velocity of the body. So combining these, I get RBV power C. So how can I calculate equating this? I have to insert here a constant K. So LHS, dimensional formula of LHS is M1 L1 T minus 2. For force it is this. Now for RHS, if it is correct,
सो वैल्यू ऑफ दिस इज नीटा, अभी हमने ड्राइव किया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर ए फॉर रेडियस एल पावर 1 एंड फॉर वी एल टी -1 पावर सी, और m1 l1 t -2 इक्वल्स टू m a l -a प्लस b प्लस c, और t raised to power -a -c. So equating the values, I will get a equals to 1. So this becomes equal to this -a plus b plus c equals to 1. So -1 plus b plus a equals to 1, or b plus c equals to 2. And from here -a minus c equals to -2. So -1 minus c equals to -2. C comes out to be 1. Similarly here b comes out to be 1. So value of a, b and c. I conclude that f is direct equals to k n r v, where value of k is determined experimentally and it comes out to be 6 pi. So f equals to 6 pi n r v. So this equation is called Stokes law. So this is a Stokes law. Now we will discuss about terminal velocity of the body. So what is terminal velocity? Terminal velocity is basically the maximum velocity acquired by the object while moving through a viscous medium. तो suppose यहाँ पे कोई liquid है and a body of radius r is falling through this medium. Suppose इसकी it will their act weight of the body will act downward and according to Stokes law, तो इस पे क्या लगेगा, एक तो लगेगी बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड थ्रस्ट, और दूसरा क्या लगेगा विस्कस फोर्स, जो भी हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ. तो वेट की अगर मैं बात करूं, वेट ऑफ बॉडी कितना होगा m इंटू जी, और मास को मैं लिख सकती हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. फाइन. नाउ फॉर ft, we know according to Archimedes principle upward beyond force is equal to weight of liquid displaced by the body. तो weight of liquid क्या होगा, mass of liquid, तो mass of liquid क्या होगा, इतना ही उसका क्या होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा इसकी जगह पे, पर उसकी डेंसिटी क्या होगी, सपोज सिग्मा. फाइन. अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ अभी हमने ड्राइव किया, कितना आया था विस्कस, जो बैकवर्ड विस्कस फोर्स थी वो कितनी लगी थी, 6 पाई आर नीटा वी. सो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, अपवर्ड फोर्स टोटल इक्वल होगी डाउनवर्ड फोर्स की, तो एफ टी प्लस एफ वी वुड बी इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी, और 4/3 पाई आर क्यूब रो जी प्लस 6 पाई आर नीटा वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी, और 6 पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा. और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो कितना आएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, स्क्वायर रह गया, और ये कितना आएगा 3, यहाँ पे 2, तो ये कितना आएगा हमारे पास 2r² जी रो माइनस सिग्मा ओवर 9. So this is the
formula for terminal velocity. Fine. So you have to do this on your notebooks, these articles that we have discussed today, and you have to solve the worksheet that I will send you in the along with this video. Solve that worksheet, read from book, NCERT solution I will send. If still any doubt is there, you may ask me personally or in class groups also. Thank you so much.